डिसऑर्डर इन द एक्सिटरी सिस्टम, डिसीज और डिसऑर्डर में फर्क होता है। डिसीज मैं बोल चुका था आपको पहले कि व्हाट इज बाय डिसीज, द एनी disturbance produced in the normal functioning of body is called as diseases. Here I'm going to explain about the disorders in the excretory system. Disease and disorder, these are the two different things. Disease means any abnormality produced in the normal functioning of body, that is called as disease. Like when we see the normal functioning in our bodies, like we are breathing 16 to 20 times per minute. Normally our cardiac output means within a 1 minute 5000 ml blood, 5000 ml, correct, this is correct, not wrong. Near about 5000 ml blood is circulated in the body, 72 heartbeats. So these are the normal functions. So when they are going to disturb by the pathogen, that will be the disease. Then what are the disorder in the excretory system? So because of certain kind of food habitat, change in the food habitat, or certain kind of error when they are occurring in the excretory system, they may lead to the different kind of disorder. So which kind of disorders are occurring in the kidney? So these disorders are uremia, glomerulonephritis, renal calculi, that is kidney stone. Then after that there will be a renal failure. So uremia means increased concentration of urea. Normally 18 to 30 milligram of urea, normally it won't be harm, it won't harm the human health. But if it exceeds beyond this level, and if that the level of this urea goes on increases, actually urea means in like here urea, uric acid, these are the substance, and they may lead to the kidney failure. Kidney failure means renal failure. Number two is this renal calculi, that is kidney stone, that is the insoluble mass of salt crystal. So they are of different size. Here you can see size. Normally up to around 5 to 10 mm of stone can pass through the urine by taking proper medicine or adequate amount of liquid or by treatment. But if it extends beyond a certain level, like a more than 10 millimeters, so on, so that is not going to easily pass out through the body. So in such a condition, surgery is needed. Different kind of methods are there to remove these kind of stones. Here you can see different sizes there. So in order to remove them, there are the different kind of treatments are there. So if we see like let me tell you some treatment, like there is ESWL is there, PNCL is there, then direct surgery is there. ESWL means extra corporeal shock wave lithotripsy. Extra corporeal shock wave lithotripsy. Litho means stone, tripsy technique is there. Then PNCL, that is precutaneous nephrolithotripsy. Then there is a surgery is there. So by this the stone is going to remove outside the body. And these are the insoluble masses of different kind of salt, like oxalate is there, different kind of salts are there when they are going to accumulate, because our kidneys are, what is the main function of kidney? As I told you before, filtration of blood, then it will maintain the level of salt, that is osmoregulation. These are the important functions of kidney. Remove the toxin by adding it into the urine, which are going to thrown outside. Then glomerulonephritis. Glomerulonephritis means infection to this glomerulus. Here see the word is there, ITS. ITS stand for the inflammation. Inflammation. And inflammation means what? Red hot swelling pain. That is called as inflammation. Red hot swelling pain means inflammation. And wherever the word is there, ITS, it will always stand for the inflammation, which means red hot swelling pain, like hepatitis, nephritis, rhinitis, so on. Then, now last one is that's a necessity of kidney transplant in a person whose kidney is completely damaged. So there will be only two options left. One of them is hemodialysis, and the another is to do the kidney transplant. So what is meant by kidney transplant? So when kidneys are damaged, so only the option left is hemodialysis. But doing hemodialysis all the time, it will be a hectic for a people. The best solution will be a kidney transplant. But to do the kidney transplant, it is not easy, because the person whose kidney is damaged, it needs a donor from where the kidney is taken from a healthy person and it is transplanted
in the deceased person. Then in such a condition, what is going to happen? See, number one, the priority is given to a cadavер, means from where the kidney is going to be taken. So if the some person is going to die or before his death, if he says to transfer the kidney, or even after his death, if his family is ready to give the kidney, so that is the first case. And number two, the living donor who is alive, so like a family member, spouse, brother, sister, so on, which are having the blood relation with the infected person or deceased person. We cannot say infected, deceased person. Then most of the transplant, the kidney is taken from the living donor instead of taking from the cadavер, because the function will be better. After taking the kidney from the living donor, the kidney can work up to 10 to 50 years. Surgery little bit complicated, it will take around 4 to 6 hours, but after that the life of person will be get improved. Then see, जिस पर्सन के अंदर किडनी ट्रांसफर की, जो जिसको डिसीज था, उसकी समझो एक किडनी खराब हो चुकी है, तो उसके अंदर अब जब किडनी ट्रांसफर की उसके अंदर, तो नंबर ऑफ किडनी जो है वो हो जाएंगे 3. देखिए, किडनी ट्रांसप्लांट करने के बाद इस पर्सन के किडनी में था प्रॉब्लम, मतलब इसकी किडनी खराब हो गई, तो इस कंडीशन को बोले रीनल फेल्योर. अब इसमें और रीनल फेल्योर एक्यूट बोलते हैं, क्रोनिक बोलते हैं. एक्यूट मतलब शॉर्ट टर्म होता है, क्रोनिक मतलब लॉन्ग टर्म होता है. तो रीनल फेल्योर होने के बाद जब इसकी एक किडनी डैमेज हो गई थी या ये दोनों किडनी डैमेज है, तो एक न्यू किडनी बिठाई है डोनर से, तो इसके अंदर जो किडनी डैमेज हुई वो निकालते नहीं. इस पर्सन में पहले 2 किडनी थे, डैमेज होने के बाद एक बिठाई, इसके अंदर टोटल नंबर हो जाएंगे 3. अगर सपोज ये भी डैमेज हो रही है और एक बिठाए, सपोज हो जाएंगे 4. मैक्सिमम 5 तक होते हैं, मतलब सो ऑन, और भी ज्यादा नहीं क्योंकि स्पेस. बट आप सोचोगे कि क्यों ये जो पर्सन है जिसकी किडनी फेल हुई, इसकी किडनी क्यों नहीं निकालते? तो यहाँ पर ब्लड लॉस होने के चांसेस ज्यादा रहता है, और जो किडनी डोनेट करा उसको ऑप्शन नहीं है कि उसका होगा ब्लीडिंग, बट वो रिकवर हो जाएगा. तो वो एक किडनी पर रहेगा, ये भी एक किडनी पर. अब मन में यहाँ पर डाउट आता है कि आप बोल रहे हो ये 2 किडनी खराब होने के बाद एक बिठाई 3 हो गया, दूसरे पर्सन में निकाली, उसमें कम हो गई, उसमें से निकालना ये ऑप्शन नहीं था, ब्लीडिंग तो होता है. और ये पर्सन जो है जिसके अंदर से एक किडनी निकाली, तब उसके अंदर एक किडनी बची है, वो उसके ऊपर अच्छे से सर्वाइव हो सकता है. या कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ लोग 1 किडनी के साथ बर्थ होता है. किडनी सिर्फ तब निकालेंगे, कभी बाहर निकालने का रीजन एक रहता है कि मतलब पॉलीसिस्टिक किडनी ऐसे कुछ कंडीशन है, उस केस में क्या करते हैं, किडनी को बाहर निकाला जाता है. अदरवाइज ये वैसे के वैसे रहता है. किडनी का वेट, डायमेंशन, सब कुछ मैं पहले बोल चुका था आपको, लगभग 150 ग्राम की होती है, सॉरी नॉट 150 kg, 150 to 170 ग्राम का होता है. डायमेंशन देखकर लगभग 12 सेंटीमीटर ऐसे वर्टिकल है, लेंथ है 5 to 7 सेंटीमीटर, और 3 to 4 सेंटीमीटर इसका थिकनेस रहेगा. कहां पर लोकेटेड है सब कुछ बोल चुका था, बट T12 से लेकर L3 के अंदर लोकेटेड है, सो ऑन, ये सब कुछ मैं बोल चुका था. अब इंडिया में जो ज्यादा से ज्यादा जो किडनी डोनर जो रहता है, तो लिविंग डोनर से लिया जाता है. अगर डेटा देखा जाए तो इंडिया में लगभग हर साल 5 लाख से ज्यादा लोग किडनी लेने के लिए, मतलब जिनकी किडनी फेल हुए, जो रीनल फेलियर से सफर कर रहे हैं, लगभग हर साल ऑन एवरेज लगभग 5 लाख से ज्यादा लोग वेट करते हैं. उनमें से कुछ ही हजारों को सिर्फ किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं. मैंने लगभग कुछ, मुझे जहां तक याद है, मैंने 2023 का डेटा देखा था, जिसमें से लगभग एक अप्रोक्सीमेटली 14,000 लोगों का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, जिसमें से लगभग 12,000 लिविंग डोनर से था, और 2,000 जो डोनर थे दैट इज फ्रॉम कैडवेयर, मींस डेड बॉडी जिनकी डेथ हुई थी, उनसे लिया गया था. लिविंग डोनर से किडनी लेने के बाद वो बेटर परफॉर्म करती है एज कम्पेयर टू कैडवेयर से. तो ये कुछ रीजन है रीनल फेलियर में, मतलब किडनी ट्रांसप्लांट में क्या क्या करते हैं. तो ये सब चीजें यहां पर देखो बोला है, ये देखिए 47-year-old scientist received a rare third kidney transplant at Amrita Hospital, living with him 5 kidneys. ये देखिए सो ऑन, जो बोला है अनबिलीवेबल ट्रूथ, पेपर में आया था.